Good evening, everyone, and thank you for joining today's webinar. The previous month was marked by a mix of positives and negatives in the economy. When we look at these flows, it would seem logical for foreign institutional investors to start covering their short positions. But interestingly, that has not happened yet. FIs remain cautious, and that's exactly what we need to understand more deeply today. To help us unfold these developments, we have Arun with us. He has prepared a comprehensive study on the key events that shaped the month. Arun will walk us through his findings, and then together we will try to arrive at a clearer conclusion on why FIs are still holding back. After that, my team will also share our top investment picks for the month of September. So let's get started. Over to you, Arun. Yeah, thank you, Shrikant. Today's webinar, we'll start first look at how the markets have done in August. Then we'll look at some important developments like GST reform, which came in yesterday night. And post that, we'll also look at some other parameters like the US tariff impact. And apart from that, we'll also talk a bit on the outlook valuations and the India inflation and monetary policy. And then, as Shrikant stated, that we'll also post that talk about some few stock ideas, and then we'll have a Q&A. Next slide. Yeah. Now, this particular slide showcases how the global indices have performed in the month of August. If you look at India, they're in the center where Nifty, BSE, Nifty mid cap and small cap indices. Now, all the four indices of India are in the red. Whereas you look at majority of the indices are in the green. You look at MSCI World, you look at MSCI Emerging Market Index, you look at all the US indices, you look at majority of the Asian indices, they actually all were in the green. However, the Indian markets actually underperformed and ended the month in the negative. Now, the key reason one can look at for this underperformance would be the markets were impacted because of the US government imposing an additional 25% penalty. This is on top of the 25% tariff on Indian exporters. The markets did see a little bit of relief in between during the month of August when the Prime Minister made an announcement that there would be some rationalization in GST rates. However, the rally soon fizzled out and the markets looked and weighed the direct and indirect impact of the US imposing high tariffs on India. Next slide. This is another way of looking how the Indian markets were weak during the month of August. Now you look at majority of the sectors actually gave negative returns, and within that a lot of sectors actually gave sectoral indices gave negative return in excess of 3%. However, there were only few sectors which actually outperformed, and within that, BSE Auto Index was a clear outlier here, moving or growing close to 6%, and this was boosted by expectation of cut in GST rates. Even other indices, when you look at BSE Consumer Durables, Consumer Discretionary, even BSE FMCG, which posted a very marginal gain, also sort of were boosted because of expectation on GST cuts. But however, the overall, when we looked at the BSE mid cap and small cap indices as well, even the NSE mid and small cap indices, they actually were negative for the month of August. And they actually underperformed the larger indices as well. Next slide. Now let's turn our focus on the GST reform, which came yesterday, and the market reacted to that today. Now, the government has announced a broad rationalization of GST rates, and they have also eliminated the compensation cess for most of the goods. So earlier there was compensation cess on 28% plus 1%, 3%, 15, 20% kind of compensation cess, but that's been eliminated for most of the goods. And this will now come into effect from September 22. Now, based on certain unconfirmed media reports, if the entire pass-through happens here, this is expected to yield an annualized household savings of close to 1.8 lakh crore, which would be around 0.6% of GDP, and will also result in growth or
better demand for mass consumption item volumes. Now, assuming a सिनेरियो जहां हम अज्यूम करते हैं कि एक जो भी जीएसटी में कट्स आए हैं वो कंप्लीटली पास थ्रू हो जाते हैं, तो वहां पर हमें लगता है कि जो मास कंजम्पशन आइटम्स हैं जैसे कि टू व्हीलर्स हो गए, या एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, और ये सेगमेंट्स में बेनिफिट आ सकता है। सीमेंट में हम बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, because cement cost is generally lower as compared to the overall cost of the project. Wahan we are not seeing a huge impact, positive impact in terms of volume growth. But yeah, anyways, 28% का 18% हुआ है, so from that perspective, it's still a positive. Now, GST rationalization अगर हम देखें तो वहां पर एक तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है जीएसटी रैशनलाइजेशन का, एंड इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग बजट द गवर्नमेंट डिड आल्सो कट इनकम टैक्स रेट्स। तो अगर हम ये दोनों चीजों को क्लब कर दें साथ में, तो हमें लगता है कि दिस कैन प्रोवाइड अराउंड 0.7 to 0.9% ऑफ डायरेक्ट सपोर्ट टू द जीडीपी ऑन अ फुल ईयर बेसिस। तो हम पूरे साल का लें अगर, तो वो फुल ईयर बेसिस पे इतना इम्पैक्ट आएगा। हाउएवर, बिकॉज जीएसटी रैशनलाइजेशन इज हैपनिंग मिड ईयर दिस टाइम, so उतना full year ये साल तो नहीं आएगा, but if this continues it might, if we look on a full year basis, the impact will be 0.7 to 0.9% direct support to the GDP. Uh, Next slide. Yeah. Now, while we talked on the positive, there is one challenge, which is there, which our country is facing right now, is this the high US tariffs on India. Now, as I talked at the start itself, when US has imposed the additional 25% tariff on India, this so making it 50%. Now, this entire 50% is higher than the tariff imposed on many other countries by the US. So, majority countries में tariff काफी कम है, but हमारा 50% है. And what we see is that ये जो disparity है, this will limit Indian exporters' ability to pass on the cost to US importers, जहां जहां 50% टैरिफ है। अगर मैं थोड़ा सा आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दूं, तो इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को, ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स में से 20% एक्सपोर्ट्स यूएस को होते हैं। इट्स अराउंड 2% ऑफ जीडीपी है, और 2% ऑफ यूएस इंपोर्ट्स फॉर्म करते हैं ये। नो, अगर हम कुछ कुछ सेगमेंट्स में ये 50% नहीं है, दे आर नॉट बीन टैरिफ येट। अगर हम पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेते हैं, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स लेते हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट और टैरिफ इज अराउंड 33%. And this we believe on an annualized basis again can have 50 to 100 basis point impact on India's real GDP growth if these elevated tariffs were to sustain going forward. So full year basis का impact इसका 50 से 100 basis point तक हो सकता है अगर ये 50% टैरिफ कंटिन्यू करता है। हाउएवर, ये साल या FY26 की अगर मैं बात करूं, तो इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। फर्स्टली अगेन, बिकॉज टैरिफ हैज नॉट कम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इट्स कम वेरी वेरी रिसेंटली मिड ईयर। सेकेंडली, अगर हम देखें तो हमारा जो यूएस को जो एक्सपोर्ट्स है स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में वो काफी स्ट्रांग रहा था, वहां पर अच्छी ग्रोथ रही है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन के टैरिफ्स आने वाले हैं, तो वो हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट्स काफी स्ट्रांग रहा है फर्स्ट 4 मंथ्स में। सो वो ये जो जीडीपी पे जो इम्पैक्ट है एटलीस्ट FY26 में वो थोड़ा सा कम कर देगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंडिया की इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी की। सो इंडिया का इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है। वी हैव सीन द इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। जुलाई मंथ में इट वाज 1.6%। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि फूड इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत लो है। इनफैक्ट फूड इन्फ्लेशन आप जुलाई का देखें तो एक्चुअली वो डिक्लाइन हुआ है 1.8% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। Inflation trajectory near term में we'll expect it to remain somewhat very soft, but going forward second half में या FY27 की तरफ we are expecting कि inflation trajectory या inflation थोड़े से बढ़ सकते हैं ये लो लेवल से। So हमारा फुल ईयर का अगर आप एस्टिमेट देखेंगे तो इन्फ्लेशन का इट्स अराउंड 2.6% इन FY26। आरबीआई का एस्टिमेट इज अराउंड 3.1% दो, और FY27 के लिए वी आर एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन एट अराउंड 4.8%। अगेन दिस इज हायर, दिस ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 2.6%, बट नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन माइट इंच अप टू 4.8% गोइंग इन नेक्स्ट ईयर। नाउ इफ यू लुक एट द ओवरऑल आरबीआई की अगर आप पॉलिसी देखें, उन्होंने लास्ट ये साल में ऑलरेडी 100 बिप्स की रेट कट कर दी है, बट जो लेटेस्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी आरबीआई की, वहां पर उन्होंने रेट पॉज किए थे और रेपो रेट को अनचेंज रखा था 5.5% पे। Now, with RBI pausing the rates in August, the bar for further rate cuts has now moved higher. स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है Q4 की तरफ या FY27 में अगर इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स ऊपर जाते हैं तो हम करंटली हमारे ये एक्सपेक्टेशन है कि
आरबीआई की तरफ से अभी थोड़ा टाइम पॉज रहेगा रेट कट में। हाउएवर, रेट कट यहाँ से तभी पॉसिबल लग रही है हमें, या तो ग्रोथ का आउटलुक बहुत वीक हो जाता है, या FY 27 का जो हमारा इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स है वो नीचे की तरफ आता है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग FY 27 इन्फ्लेशन टू बी हायर, बट अगर वो नीचे की तरफ आता है देन देर माइट बी अ चांस कि पॉसिबल फ्यूचर रेट कट्स हो सकते हैं। बट हाउएवर राइट नाउ हमें लग रहा है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट्स में थोड़ा पॉज रहेगा। अगर हम इंडिया के जीडीपी नंबर देखें, Q1 का जीडीपी नंबर वो 7.8%। ये रिफ्लेक्ट हुआ था लो डिफ्लेटर की वजह से, बट एनीवेज इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दैट इट वाज वेल अहेड ऑफ व्हाट द स्ट्रीट और द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जो हमने 50% यूएस टैरिफ की बात की थी, इसका इम्पैक्ट हमें लगता है कि Q3 FY 26 से इकोनॉमी पे आ सकता है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, बिकॉज जीएसटी के अभी जो स्टेप्स गवर्नमेंट लिए है वो इसको कुशन करेंगे। नेक्स्ट। अगर हम आउटलुक की तरफ देखें तो इंडिया में हमें यू नो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द गुड थिंग्स, एंड व्हाट आर द पॉजिटिव या चैलेंजेस हमें लगता है। फ्रॉम अ पॉजिटिव थिंग व्हाट वी लाइक इज कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स एक तो रिड्यूस किए हैं। इससे पहले जैसे हमने बात की थी टैक्स स्लैब्स में भी उन्होंने कट किए थे, इनकम टैक्स कट हुआ था बजट में, और आरबीआई ने 100 बिप्स रेट कट किए हैं। ऑल दीज मेजर्स वी बिलीव विल सपोर्ट कंजम्पशन। The other thing what we see as positive is the good monsoon. Monsoon so far has been 6% above long period average. And monsoon का जो पिकअप हमने pretty strong देखे हैं अगस्त में, and we believe this will support rural demand. So अगर रूरल डिमांड सपोर्ट होता है इसके वजह से, और रूरल में डिमांड पिकअप होता है मानसून की वजह से, दैट अगेन शुड बी पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। अब इंडिया के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हैं? पहला चैलेंज है अगेन हाई यूएस टैरिफ। यहाँ पर अगर कुछ रिवाइज हो जाती है टैरिफ्स लोअर, आई थिंक दैट वुड बी पॉजिटिव, बट अगर 50% अगर टैरिफ्स कंटिन्यू रहती है, आई थिंक दैट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया। The second challenge which the markets in fact are facing is consistent selling of FPIs. That continues. Now हमने already challenges बताए हैं इंडिया के क्या है, वेयर यूएस टैरिफ्स है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है उसको लेके, बट गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, बट एफपीआई सेलिंग एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, या सेलिंग हो रही है। वैल्यूएशन भी अगर आप मार्केट का देखें तो मार्केट ऑल्सो लुक्स टूवर्ड्स फेयरली वैल्यूड एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप निफ्टी का पी देखें वो अराउंड 22-22.5 टाइम्स है, 26 नंबर्स पे अराउंड 19 टाइम्स है, पी बेसिस पे 27 नंबर्स पे, विच अगेन when we compare globally, which we'll look at the future आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे further स्लाइड्स में, but markets look pretty fairly valued at this point in time. Next slide. Yeah. So this chart basically ये हमारा जो चार्ट है ये मेजर इंडाइसेस है इंडियन मार्केट्स के। इसमें सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, बीएसई 100, एनएसई 100 एंड 500 इंडेक्सेस है। अगर आप मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ पीरियड, 3 मंथ पीरियड और 1 ईयर पीरियड पे मार्केट्स ने कंसिस्टेंटली नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। सिर्फ बीच में एक पीरियड आया था जहां पर देयर वाज सम पॉजिटिव रिटर्न। सो 6 मंथ पीरियड पे देयर इज अ पॉजिटिव रिटर्न, बट ओवरऑल फ्रॉम अ 1 ईयर पीरियड द मार्केट स्टिल कंटिन्यूज टू बी इन अ टाइम करेक्शन जोन। नेक्स्ट स्लाइड। नो दिस चार्ट बेसिकली इज द ग्लोबल इंडाइसेस का परफॉर्मेंसेस है, और इसमें इंडिया भी है। इंडिया आप नीचे से थर्ड देख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन 1 मंथ परफॉर्मेंस में इंडिया का नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप 3 मंथ में देखते हो अगेन इंडिया नेगेटिव रिटर्न कर रहा है। फुल ईयर बेसिस पे भी इंडिया नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, जबकि आप फुल ईयर 1 ईयर बेसिस पे देखोगे तो वी आर वन ऑफ द वीकर परफॉर्मेंस, बिकॉज आप बहुत सारे मार्केट्स देखोगे 1 ईयर बेसिस पे उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न दिए है, बट इंडियन मार्केट्स का रिटर्न -3.2% रहा है निफ्टी का। नेक्स्ट स्लाइड। और उसका रीजन बेसिकली एक ये भी रहा है बिकॉज वैल्यूएशन है। नाउ ये चार्ट आपको वो कवर करेगा, वो वैल्यूएशन वाला पार्ट। आप निफ्टी का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो एज अ टॉक्ड अबाउट ये 22.7 टाइम्स है और 19.1 टाइम्स 27 पर FY 27 पर है। अगर आप ग्लोबल देखेंगे, काफी सारे इंडाइसेस देखेंगे तो वहां से हमारा मार्केट काफी प्रीमियम ट्रेड होता है, जबकि हमारी ग्रोथ ये साल काफी सिंगल डिजिट में, इट्स लाइक 9% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी इंडेक्स की कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ में। अगर ये ग्रोथ आगे चल के कंजम्पशन के वजह से बूस्ट होती है, सो आई थिंक दैट शुड बी अ पॉजिटिव। एंड अगेन विल हैव टू, the government, as I told you, has been taking a lot of steps to boost consumption, and if this continues, and अगर टैरिफ के वहां भी अगर हमें लगता है कोई पॉजिटिव अगर कुछ न्यूज आ सकती है, अगर वहां से कुछ आती है, तो आई थिंक दैट शुड बी
positive for the markets. So these are the two things we'll have to watch out going forward. One is कि consumption में revival कैसा हो रहा है, and second, if there is any comments on news flow that is coming on US tariff front. Next slide. So let's now move on to stocks. Stocks में मैं दो stocks आपको cover करूंगा, उसके बाद I'll just hand over to my colleagues. They'll talk on other stocks. One is Amber Enterprises. या सो एम्बर पे हमारा एड रेटिंग है फेयर वैल्यू 8900 का है. नो एम्बर इज अ कंपनी, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबिलिटी सोल्यूशन. अगर आप देखें तो रूम एसी में जो एसी के जो पार्ट्स होते हैं वो काफी सारे पार्ट्स और फुल एसीज भी कंपनी बना के ब्रांड्स को देती है. इलेक्ट्रॉनिक्स में दे आर इनटू पीसीबी और पीसीबी के असेंबली सॉल्यूशंस करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के, जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स को काउंट देते हैं, कस्टमर्स को देते हैं. और इनका रेलवे सबसिस्टम डिफेंस डिवीजन भी एक है, जहां पर ये कुछ क्रिटिकल सबसिस्टम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है रोलिंग स्टॉक कस्टमर्स के लिए. अगर आप इनका Q1 का परफॉर्मेंस देखें ना, Q1 देखिए, आप ये देखिए कि एसी इंडस्ट्री के लिए Q1 काफी वीक था, बिकॉज समर्स वीक थे, मानसून्स थे, तो उतनी डिमांड एसी की नहीं रही थी. बट हाउएवर डिस्पाइट दैट इनके परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा था Q1 में भी. और इन्होंने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट किया है जीएमसीसी के साथ. Now, GMCC is the world's largest compressor manufacturer. Just to highlight कि इंडिया में हम बाकी सारे पार्ट्स तो बनाते ही हैं, बट कंप्रेसर हम जनरली इंपोर्ट करते हैं और वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंपनीज फॉर कंप्रेसर्स. नाउ दे हैव साइंड, बीच में थोड़ी न्यूज थी कि कंप्रेसर का शॉर्टेज हो सकता है. नाउ दे हैव साइंड दिस अग्रीमेंट विद देम. So this ensures compressor supplies for Amber for 3 years. So that's again a positive development. अगर मैं उनका दूसरा सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स देखूं तो वहां पर दे आर इंटेंडिंग टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू टू $1 billion, विच इज अगेन अराउंड 8800 करोड़ रुपीस विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स. अगर आप FY25 में उनका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का रेवेन्यू देखोगे, दिस इज 2200 करोड़. सो दे आर लुकिंग टू रियली एक्सपैंड दैट बिजनेस रेवेन्यू. उन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं एंड दे आर लुकिंग टू पुट अप कैपेसिटीज और केपिक्स भी कर रहे हैं उस सेगमेंट में. Mobility maybe they are looking to double their revenue by FY27. So from a revenue perspective, we expect a very very strong revenue growth. ACs में anyways अगर समर स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी एसी की डिमांड स्ट्रांग रहेगी. तो रेवेन्यू वाइज हम देख रहे हैं 25 से 28 3 ईयर पीरियड पे उनका 22% रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है CAGR बेसिस पे. और अर्निंग्स ग्रोथ हम देख रहे हैं प्रीटी स्ट्रांग. दिस ईयर 26 में अराउंड 96% एंड नेक्स्ट ईयर 42% हम देख रहे हैं उनकी अर्निंग्स ग्रोथ. तो वहाँ नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड वी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि कंपनी का जो रेवेन्यू बेस है वो कैसे डाइवर्सिफाई हो रहा है. उनका आप देखोगे FY18 में मेजॉरिटी रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता था, विच मीन्स वो एसी सेगमेंट से मेजॉरिटी आता था. ओनली 5% वाज इलेक्ट्रॉनिक्स. बट अगर आप FY25 में आएंगे तो वो अभी 22% इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है. जिस हिसाब से उन्होंने नंबर्स दिए हैं कि उनका ग्रोथ का जो एम है या ट्रेजेक्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर और भी आगे बढ़ेगा, विच मीन्स कि उनका डिपेंडेंसी जो है एसी पे कम होगा. एसी हमेशा एक सीजनल बिजनेस होता है, जहां पर कंपनी के लिए फोर्थ क्वार्टर या जनवरी से लेके जून वाले जो 2 क्वार्टर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बट बाकी 2 क्वार्टर्स रिलेटिवली रेवेन्यू में इम्पैक्ट करते हैं. बट जैसे जैसे अगर उनका रेवेन्यू शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ेगा तो वो आपको वोलेटिलिटी कंपनी के अर्निंग्स में कम दिखेगी. नेक्स्ट स्लाइड. दूसरा स्टॉक आई डिस्कस इज ऑन सामी होटल्स, वेयर वी हैव अगेन अ बाय रेटिंग हियर एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 275. Now, Sami is a leading hotel ownership and an asset management company. They have a portfolio of around 31 operating hotels, जिसमें टोटल अराउंड 4800 रूम्स हैं, एंड दे आर स्प्रेड अराउंड 13 cities. एंड दे पार्टनर, दे हैव पार्टनरशिप्स और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वी कैन से विथ मैरियट, ISG एंड हयात. Now, we believe the company is on a pretty healthy growth trajectory, and this would be aided and supported by increase in room rates and occupancy. So, hotel industry आप देखेंगे तो काफी उन्हें tailwinds मिल रही है. People are sort of traveling a lot, and people are moving towards brands. वहाँ पर company is also working on जो उनका existing portfolio है उसे भी upgrade कर रही है, तो that should help जो room rates है वो increase होंगे and occupancy भी help करेगी because people are traveling more. Second is from a growth perspective, अगर आपको grow करना है तो you'll require to add lot of more properties or rooms. So company के plans हैं, they currently have around 4,800 I told you, and they'll be adding 596 or 600 rooms more, which will take the portfolio to 5,400 rooms by around FY29. Now company ने GIC के साथ बीच में एक पार्टनरशिप की थी,
जिससे कि जीआईसी से उन्हें फंडिंग मिली थी। और ये पार्टनरशिप में बेसिकली कुछ उनकी 5 होटल्स में जो जीआईसी ने स्टेक लिया हुआ है, जिससे कंपनी को कुछ पैसे मिले थे, दे हैव यूज दैट मनी टू रिड्यूस द डेट। एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंटरेस्ट कॉस्ट हैज आल्सो कम डाउन। इन्होंने रिसेंटली एक होटल या प्रॉपर्टी वो भी बेची है। सो ओवरऑल द कंपनी इज मैनेजिंग देयर डेट, बिकॉज दैट्स होटल इंडस्ट्री में जो होटल एसेट्स बनाते हैं उनके लिए दे कंटिन्यूअसली नीड मनी। सो वहां पर दे आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डेट प्रीटी वेल। और कंपनी का एक्सपेक्टेशंस है कि FY 30 तक उनके पास 1700 करोड़ रुपीस का नेट कैश सरप्लस होगा। एंड दिस विल हेल्प फॉर इंक्रीमेंटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर them. From a valuation perspective, Samhi is trading at a discount as compared to the listed player in the hospitality business. Next slide. This is just one slide where it shows कि उनके revenues कहाँ से आते हैं। 43% comes from upper upscale, 42% comes from upper mid scale, and 15% from mid scale kind of revenues. और food and beverages around 25 rooms से majority revenues, उनको 72% that comes from rooms. So this is just a chart to show where their income mix is, how the income mix is. Overall, we are positive investor with a fair value of 275 on Summit. That's it from my end. I hand over to my colleague Pankaj. Yeah, thank you, Arun. Good evening, everyone. So the next stock that we are discussing is Thermax, जहाँ पर हमारा ad rating है and fair value is 3,900 rupees. Thermax is a capital goods player. It's very long. It is having very long history of more than 60 years. They serve to multiple industry, more than 30 industry they are serving. And the company is operating through 4 different segments. Industrial product segment जहाँ पर वो cooling and heating solution provide करते हैं, water and wastewater solution provide करते हैं. So this segment contributes roughly 42% of the total revenue. Another big segment is industrial infra business where they do projects and energy solution. So यहाँ पर करीबन 44%, 44% revenue आता है. It's a relatively low margin, but high contributor to top line. Green solution, which is very growing fast. So that contributes roughly 7% revenue, and where the company provides renewable energy solutions and the green and hydrogen, and also all renewable sort of businesses are carried out through this. Chemicals business जो 7% revenue, 7% revenue contribute करता है, that is where they supply the industrial chemicals, construction material जो जहाँ use होते हैं वहाँ पर जाते हैं, and all water treatment business में जाता है. So that is a high growing business and high margin business as well. In terms of, if you look at why we like this stock, because if you see the company is making partnership, they are doing new capex and entering into new markets. So they have done partnership in different market like UK, Brazil. So in different market as such. They are also enhancing their capacity at different location. Like in chemicals business, they are expanding capacity in Jagadia in Gujarat. So in that way, they are growing. Industrial product business has increased the pace of product launches, and there's several launches that has seen in the recent past, and that will drive their business in future. Industrial infra and product segment में जो order backlog है, that has seen a strong run up. Roughly industrial infra में 20% growth देखा गया है, and product segment में 12% growth देखा गया है. Even the pipeline is quite strong. It is growing at 15%. So in that way, the future looks strong, and they have seen order pickup in power, sugar, distillery segment. Chemicals business has been largest growth potential, that which I said just now. So they are entering into high-end new chemicals. They're doing a lot of R&D, and they're getting into new chemicals which are used for industrial purposes. So in that way, that business has a very strong growth prospects. इनका जो एक सब्सिडियरी है थर्मैक्स, Babcock's and Wilcox Energy Solution, that has a very strong growth potential. It can double its top line based on the sizable this supercritical boiler order which they have got. So that is also going to drive the business. Overall, next slide, please. If you look at the order backlog, so the company is having more than 10,000 crore of order backlog, and it is diversified across various industries, which is mentioned in this slide: power, metal mining, sugar, distillery, refinery. So in that way, they are very much diversified.
And जो order backlog का जो growth है, in fact, if you see that has been very strong, particularly in the base order. So that provides more consistency if your base order is doing very well. So here, that's what we have seen in the last 4 years. It's been consistently growing. So in that way, the company is looking strong. We are expecting 15% growth in ordering and roughly 12% growth in uh, revenues in next 2 3 years, and the profits will look higher. It is expected to grow at more than 20% in next 2 years. Stock has corrected sharply after the results, but now this is at this level. We like the stock. We have ad rating and we have a fair value of 3,900. Over to Rini. Thank you, Pankaj sir, and good evening, everyone. Our another stock pick for the month is from the chemical space, SH Kelkar. It is India's largest homegrown fragrance and flavor company. आपको इनका नाम शेल्फ्स पे शायद नहीं दिखे, but chances are you have already experienced them in your soaps and shampoos to perfumes and deodorants. So, you know who actually creates the fragrance in your these day-to-day products? It's companies like SH Kelkar. So SH Kelkar is not just about manufacturing. ये पूरा काम क्रिएटिविटी और आईपी ड्रिवन है. एक बार फ्रेग्रेंस लॉक हो जाती है तो वो सालों तक चेंज नहीं होती है, राइट? सो दैट्स व्हाई कस्टमर रिलेशनशिप्स हियर आर वेरी स्टिकी. Globally, if we see, there are four giants like Givaudan, फर्मनिश जैसी कंपनीज 67% ऑफ द मार्केट कंट्रोल करती है. इनके बीच एसएच केलकर छोटा है बट टेक्निकल एक्सपर्टीज में स्ट्रॉन्ग है, एंड मैनेजमेंट इज टारगेटिंग $1 billion इन रेवेन्यूज बाय 2030. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Going forward, अगर देखें why we like the company, SH Kelkar is targeting mid-teens revenue growth, which will be supported by new launches and also expansion in Europe, Southeast Asia, and the US. Margins are also expected to improve to 18 to 20% by FY27. Plus, it's an asset-light business, so cash flows strong रहेंगे and debt will keep reducing. And the most interesting part is, despite this growth runway, valuations abhi bhi attractive हैं. For example, Givaudan trades about 25 times 25 times PE, लेकिन SH Kelkar is just around 15 times FY27 earnings. So मतलब growth भी है और valuations भी are looking good. So we have a buy rating on the stock with target price of 430. That's it from my side. Over to Veer. Thank you, Rini. Hello to all. A very good afternoon. HDFC Life is the next stock which we will discuss. Now, अगर हम financial segment को पूरी बात करें from a macro lens, so we are currently standing at a time where अगर हम banks में देख रहे हैं तो we are seeing some sort of a loan degrowth happening banks में, margin pressure में रहेगा for 1-2 quarter. NBFCs में we are seeing some signs of stress building up in few pockets. EMC stock broking जो business है, they are dependent on market, and market we know are sort of range bound. So वहाँ से activity नहीं देखने मिल रही. And therefore, at a time like this, life insurance is seen as an interesting bet, is what we believe. And life insurance में HDFC Life is a stock which we like. Now, HDFC Life say we are expecting 18% VNB growth for the next 3 years, which is pretty impressive. अगर हम उनके ये Q1 की बात करें रिजल्ट की, तो it has been pretty good. Top line growth was around 13% level और margins maintain रहे. H2 of this quarter we expect कि growth pick up होगा, and जो company की overall strategy है of moving towards non-par product would be margin aiding. Non-par is margin accretive product, so वहाँ से भी company के VNB margins को support मिलेगा. So overall, fundamentally, we like HDFC Life. Valuations fair है, and upside potential is good and downside risk is limited. Therefore, it's a stock which we like. Also, I'll just briefly touch up upon global questions regarding the GST impact on HDFC Life or the entire life insurance segments. So now we understand that the GST rates on life insurance is now to 0% levels. So ये कैसे impact होगा life insurance players को? So यहाँ दो स्टेक होल्डर्स है, एक तो पॉलिसी बायर और एक शेयर होल्डर. तो फ्रॉम अ पॉलिसी बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये अच्छा स्टेप ही है. बेसिकली आपके प्रीमियम्स कम हो जाएंगे, तो पॉलिसी बायर्स वुड बी सेविंग मोर मनी. बट अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें,
So here the situation gets a little tricky. So basically अभी कैसा होता है कि जो इंश्योरेंस प्लेयर्स होते हैं दे सेल their life insurance policy and they get GST. Now, these life insurance players also have other operating expenses where they pay GST to the seller. And by the month end, जो GST government को देते हैं, that is net of the GST they receive and net of GST which they pay. Now, post this new taxation जो हो गया है 0%, now they won't be getting any GST, but they would still have to pay GST to the government at the end of the month. And therefore, यहाँ उनके expenses would increase and उनके ratios would see some hit. Now ये hit जो है, it is still not very big. It would be low single digit sort of an impact जो life insurance players को मिलेगा. Now, how they will offset this impact, whether they pass it on to consumers by increasing the premium or they pass it on to the third party distributors or whether they take the hit, यहाँ clarity नहीं है. And therefore, due to this unclarity, आज हमने देखा कि life insurance stocks काफी गिर गए नीचे by the end of the day. So this was on the GST impact. But overall, our view on life insurance remains positive. ये एक long term story है. और इसमें HDFC Life is a very strong player where we have a buy rating with a fair value of 925. Thank you, Veer and team, and thank you so much for staying with us through all the slides. Now, let's move into one of the most exciting parts, that's Q&A session. If you have any questions, feel free to drop them in the chat. My team and I will be happy to take them. So let's begin. I'll start with the first question. Do you find it difficult for the Indian IT industry to outpace global peers given the current single-digit growth trend? Does this indicate a cautious outlook on the sector? For IT, we have our IT sector analyst, Sumit Pokhanna. So over to you, Sumit, sir. Thank you very much. See, broadly, if you look, Indian IT companies are getting impacted because of the tariff thing which is going on. And this is not the only sector. Many other sectors are getting impacted because of the tariff concerns. We believe that a lot of these negatives are already in the price, first of all. Now, going forward, what needs to be seen, ki trigger kya hai? What are the green shoots for the sector? First green shoot according to me is the Fed rate cut. अगर US में interest rate cut होती है तो it is quite positive for BFSI vertical, which is जो US based banks हैं उनके लिए positive होगी. अगर उनके लिए positive होगी तो they will be spending a little more on IT. और Indian IT companies का सबसे ज़्यादा revenue contribution by and large BFSI vertical से आता है. So it will be positive trigger for the. So first हो गया valuation comfort. Second is green shoot in terms of Fed rate cut. Third, according to me, is if this tariff war gets settled for some or the other reason and prior to what everybody is expecting, then it will be a big win for the sector. Then I think this sector is going to outbeat many other sectors out there. So that's my answer. Thank you, Sumit sir. Moving on to next question from Auto Space. What will be the impact of GST on autos? For this, we have Arun Agrawal for queries on auto. Over to you. Yeah, thanks, Vinny. So basically, ऑटो सेक्टर आप देखेंगे तो जब से 15 अगस्त को जब अनाउंसमेंट हुई थी तभी से हमने ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी रैली देखी है. इनफैक्ट जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में दिखाया तो ऑटो सेक्टर वाज द इंडेक्स वाज द आउट परफॉर्मर डिस्पाइट कि मार्केट में वीकनेस रही थी अगस्त में. एंड उसके वजह से टुडे वी माइट हैव सीन अ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं था. कुछ स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रिएक्शन था बट बहुत स्टॉक्स में बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं रहा था. बट कमिंग ऑन टू व्हाट जीएसटी में क्या इम्पैक्ट होगा ना, जीएसटी में ऑटोज 28% पे थे. कुछ सेगमेंट्स उसमें दे वर लोअर सॉरी हायर जहाँ पर कंपेंसेशन सेस भी था, स्पेशली इन द कार सेगमेंट में. अभी जो ऑटोज में हुआ है इसमें देखिए टू व्हीलर्स 350cc एंड बिलो ये पूरी की पूरी अभी 18% जीएसटी पर हो जाएगी 28% से. और स्मॉल कार्स भी जो है उनके डेफिनेशंस हैं वो भी आपके 18% पे हो जाएंगे. और बाकी की जो बड़ी कार जो एसयूवीज है दे विल बी एट 40%. नाउ ओवरऑल व्हेन वी लुक एट द सिनेरियो इट इज पॉजिटिव डेफिनेटली.
फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो इसमें जो जो दो चीजें पॉजिटिव उभर के आएंगी, एक तो वो है कि इससे डिमांड ड्राइव होगा बिकॉज प्राइसेस कम करेंगी कंपनीज, और सेकेंडली इसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा मास कंजम्पशन सेगमेंट्स पे ज़्यादा होगा, जैसे एंट्री लेवल टू व्हीलर्स हो गए या स्मॉल पैसेंजर कार्स हो गए। इसमें ओवरऑल प्लेयर्स जो टू व्हीलर्स में जिनका ज़्यादा फायदा होता है उसमें हीरो मोटर कॉप है, बिकॉज उसका बहुत सारा पोर्टफोलियो 110 सीसी 125 सीसी मोटरसाइकिल्स में है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स को भी फायदा होता है, और आयशर मोटर को भी उनका जो 350 सीसी के बिलो वाला पोर्टफोलियो उसमें फायदा होगा। बजाज को भी बेनिफिट है इसमें, बट उनका एक बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट्स भी है साथ में। फोर व्हीलर्स में आप देखेंगे तो इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेनिफिट होगा, ट्रैक्टर्स में एसयूवीज में वहां पर भी प्राइस कट्स हुए हैं। उसके अलावा मारुति को काफी फायदा है, मारुति मार्केट लीडर है स्मॉल कार्स में, तो वहां पर अगर रिकवरी आती है तो मारुति को काफी फायदा होगा। ये एंटायर एक्सरसाइज से एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस नॉन कार सेगमेंट या टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स इनमें अराउंड से 5 to 8-9% तक कम, 8% तक कम हो सकते हैं। कार में इट विल कम डाउन बाय से 2-3% से लेकर के 8-9% तक कम हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल द ओवरऑल सिचुएशन राइट नाउ इज इन ऑटो स्पेस। Thank you so much, Arun sir. Moving on to next question. Another participant wants to know his view on real estate sector. For real estate, we have Pankaj Kumar. Over to you, sir. Sure, Rini. So real estate sector पे अगर देखेंगे, we have been all constructive on this sector. So the last quarter overall, if you look at the sector, that was a relatively slower one, or we can say modest. The industry grew at roughly 9%. But when you look at the large listed players and our coverage universe, so that has grown very well in terms of pre-sales. 45% kind of pre-sales we have seen in our coverage universe. और उसमें जो बड़े ड्राइवर थे प्रेस्टीज एंड डीएलएफ, बिकॉज उनके बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस हुए थे एंड दे हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स टू दैट। बट हाँ, अदर मार्केट्स हैं लाइक पुणे, एमएमआर, हैदराबाद, ये थोड़ा सा वहाँ पर हमने देखा था कि वीकनेस रहा है। बट ओवरऑल लॉन्च पाइपलाइन, सारी कंपनी जितनी भी बड़ी लार्ज कवरेज कंपनीज हैं सभी की लॉन्च पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, एंड दे हैव अ बिग प्लान्स इन कमिंग क्वार्टर. So most of these companies are targeting very decent growth, kind of double digit kind of growth in the pre-sales number for the full year, और गाइडेंस लार्जली उन्होंने मेंटेन रखा है। और वैल्यूएशंस भी अगर देखेंगे, जो रिसेंट करेक्शन हुआ है स्टॉक में, तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, करीबन 7 to 10 times EV बिटा ऑन अ प्रीसियस नंबर, वो भी अट्रैक्टिव है। अभी इन्वेंट्री इन द सिस्टम इज वेरी लो, 1.5 years ऑफ द इन्वेंट्री इज देयर। तो ओवरऑल सेक्टर पे लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। वन कैन लुक एट दी स्टॉक्स, पर्टिकुलरली द स्टॉक्स लाइक लोधा, डीएलएफ, ब्रिगेड, प्रेस्टीज फॉर लॉन्ग टर्म एट द करेंट लेवल्स। Thank you, Pankaj sir. Moving on to next question, which is again related to GST changes today. So how participant is asking how are recent GST changes affecting everyday consumer staples like I request everyone to please go on. Yeah, thanks. So consumer staples like food and household items, again, there is some disturbance. Okay. And what does it mean for FMCG companies' costs and pricing? Over to Amit sir for this query. Yeah. देखो, there was broad-based reduction in GST rates of most food and personal care categories. हमको ऐसा लगता है कि इसके वजह से डिमांड पार्शियली रिवाइव हो जाएगा। लास्ट 2-3 साल से डिमांड काफ़ी वीक है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ कमोडिटी इन्फ्लेशन। जो अभी डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा जीएसटी के वजह से, वो पार्टली इसको एड्रेस करेगा। फर्दर हमने ये भी देखा है कि रिसेंटली देयर वाज ईजिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली पाम ऑयल, टी, कॉफी। मॉनसून भी काफ़ी अच्छा है, और जो बेस बना है फेवरेबल है, स्पेशली फॉर अर्बन कंजम्पशन। हमने ये भी देखा था कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने पर्सनल इनकम टैक्स को रिड्यूस किया था, और अपकमिंग जो पे कमीशन है ऑल ऑगर वेरी वेल फॉर एफएमसीजी कंजम्पशन इन द नेक्स्ट 12 to 15 months। हमको ऐसा लगता है कि सारी कंपनियां
जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास करेगी, स्पेशली बिकॉज जीएसटी में एक एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज भी आया है। और वी एक्सपेक्ट वॉल्यूम और रेवेन्यू कंपनीज का इम्प्रूव होना फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑफ FY 26। हमें ये भी लगता है कि दिस जीएसटी कट वुड ऑफर सम हेडरूम फॉर प्राइस इंक्रीज इन मीडियम टर्म फॉर कंपनी स्टार्टिंग FY 27 एंड FY 28। इन सारे सिचुएशन में ब्रिटानिया, नेस्ले एंड कोलगेट आर एक्सपेक्टेड टू बी द की बेनिफिशरीज। और उसके बाद जो सेकंड इन लाइन बेनिफिशरीज है वो है डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेजेस के लिए न्यूट्रल रहा है जीएसटी रिडक्शन। और आईटीसी के लिए एग्जिस्टिंग जीएसटी है वो भी न्यूट्रल रहा है। ओवरऑल इस सेक्टर में हमें स्टॉक्स जो अच्छे लगते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर और सफायर फूड्स और पीडिलाइट और इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स। Thank you, Amit sir. Dear participants, due to time constraint, we will end the Q&A session here. And with that, I would like to invite our head of research, Mr. Shrikant Chouhan, for his closing comments. Over to you, sir. Thank you, Rini. So we went through with entire presentation, and based on that, one thing is very clear that our valuations, I mean to say India's valuations, are on the expensive side. And also if we go through with the global macros, then there आप देख सकते हो कि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 4.25 4.30 के करीब ट्रेड कर रहा है, which attracts lot of inflows from emerging markets. अगर आप बाकी मार्केट्स की भी अगर बात करेंगे तो जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स है, इंक्लूडिंग शंघाई से लेके ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, इन सभी से भी आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन वहाँ के मार्केट्स फिर भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं। तो सबसे बड़ा प्राइम रीजन यही है हमारे मार्केट्स न चलने का कि हमारे वैल्यूएशंस ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, और एक्सपेंसिव साइड के वैल्यूएशंस में जो एग्रेसिव बाइंग होती है वो मिसिंग है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, लेकिन वो उन पॉकेट्स में बाय कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं जहां पे वैल्यू है। फॉर एग्जांपल आईटी, वहां पे हमें अभी तक इतनी बड़ी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। और अगर व्यू रखना है तो वेरी लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ता है, दैट इज 12 to 18 months। इसी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे बाइंग नहीं आ रहा है, जो निफ्टी 50 का एक बड़ा कंपोनेंट है। प्लस अगर बीएफएसआई की बात करें तो मैक्सिमम स्टॉक्स अपने फेयर वैल्यू के काफी नजदीक है। और इस बार का जो क्वार्टर है वो भी थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ दी लोअर स्प्रेड बिटवीन लेंडिंग्स एंड बोरोइंग्स। तो इसी वजह से मार्केट जो जो मेजर कंपोनेंट्स है बैंक्स और आईटी, इसकी वजह से मार्केट रुका हुआ है और मार्केट एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है। नो डाउट कि आज का जो जीएसटी का जो न्यूज़ आया है वो बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट के लिए, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है या तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो लॉन्ग टर्म के रहेंगे। उसका इम्पैक्ट जैसे अरुण ने बताया कि Q3 Q4 में हमें दिखाई देगा। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि इसी वजह से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, और जो एफआईज है दे आर स्टिल शॉर्ट ऑन द मार्केट। अच्छा, निगेटिव न्यूज फ्लो आने के बाद भी वहां पे शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है, यानी कि निगेटिव न्यूज फ्लो अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ टैरिफ, 50% टैरिफ फ्रॉम यूएस ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, ये न्यूज आने के बाद जब मार्केट कोलैप्स हुआ था उसके बाद भी हमने देखा कि एफआईज ने शॉर्ट अपने कवर नहीं किए। इसका मतलब यह है कि वो लोगों ने एक बड़ा व्यू लेके रखा हुआ है, और उस बड़े व्यू के साथ दे आर कीपिंग देयर शॉर्ट पोजीशंस। अभी जब तक अर्निंग्स में रिवाइवल नहीं आता है या इससे भी कोई और बड़ा ट्रिगर अगर आता है, पकड़ लेते हैं कि शायद यूएस के साथ कोई निगोशिएशन हो जाए, हम 20% टैरिफ के ब्रैकेट में आ जाए, समथिंग लाइक दैट, अगर वैसे कुछ अगर होता है तो शायद मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ दैट मुझे लगता है कि ग्लोबल मैक्रोस जो है वो काफी पॉजिटिव है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो तो मैंने बात कर ली ऑलरेडी कि वो इट इज ऑन द हायर साइड। डॉलर इंडेक्स इज अराउंड 98 sort of levels, and our currency
which was around 85 sort of levels, is now trading at 88, 88.20. So all these reasons are keeping FIs more confident to remain short on the market. तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इवेंट है जिसके बारे में डिस्कस करना था, जो आज हमने भी डिस्कस कर लिया है। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो 25,200 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद ही स्ट्रांग हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट हम वापस से एक बार 24,500 तक जा सकते हैं, एंड ऑन द डिसमिसल ऑफ 24,300 हमें लगता है कि मार्केट में और भी वीकनेस देखने मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम एफआईएस की एक्टिविटी देखें एंड कंपेयर दैट अगर हम करेंगे विथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर इक्वली बाइंग इन द मार्केट। इनफैक्ट दे आर बाइंग मोर देन what FIs are selling in the market। तो लास्ट मंथ के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो FIs ने कुछ 50,000 करोड़ का कैश में जो इक्विटी था उसका इन्वेस्टमेंट बेचा है, एज कंपेयर टू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हु हैव बॉट मोर देन 95,000 करोड़। तो ब्रॉडली ये जो सेलिंग है वो ऑफसेट हो रहा है, और इसी वजह से डाउनसाइड भी मार्केट में लिमिटेड है। तो ऐसे मार्केट में हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। उन स्टॉक्स को बाय करें जहां पे वैल्यू है। आज के हमारे वेबिनार में हमने मंथली मार्केट स्ट्रेटेजी में उन्हीं स्टॉक्स को कवर किया जिनमें डीप अपसाइड है इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल वैल्यू। तो इसी वजह से हम आपको भी यही एडवाइस करेंगे कि आप उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे फंडामेंटल अपसाइड है, प्लस आने वाले दिनों में इन्हीं कंपनीज में कुछ ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि ऐसे मार्केट्स में भी आप अच्छे रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कमा सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you, Shrikant sir, and thank you everyone. Just a quick reminder, stay connected with us on Telegram, Instagram, and Twitter for regular research updates and stock ideas. Thank you for being with us. Happy investing. We'll see you next time. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.